Hello, am I audible? Hello, am I audible? Okay, good morning, everybody. Hope all of you are doing good, hale and hearty, happy. Okay, so let's wait for another 1 minute. Then we'll be starting. ठीक है, कुछ और बच्चे आ जाएं, then we'll start. Is that okay? Good morning, Prabodh, Sandy, Kabir. Good to see all of you here. Let's wait for another 5 minutes, then we're going to start. Sorry, 1 minute. Hi, Likhit. Good morning, Atul. Good morning, Shikha. Good morning, Atul. Good morning, Regina. Good morning, Mehek. Bas or 30-40 seconds, we're going to wait, then we'll be starting. Good morning, PKS. Brijesh. Good morning, Mehek. So today's class is about, again, high-yielding topics would be covered via MCQ discussion. ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके, we'll try to cover as many MCQs as possible, ones that are asked, most commonly asked. ठीक है, all of you? Okay, this will also be helpful for the FMG students as well as all of you who are preparing for other entrances examination. ठीक है? चलो. So is it okay if we start? Let us start. You could message your friends to come join in. All these MCQs are important. So a message drop kar do apne doston ko, your friends, so that they can come and join as well. Okay. So this slide you've seen. Again, MCQ marathon का बैच चल रहा है, and Educator Plus batch for me starting on 25th of June. It's a capsule course on PSM. We'll go on till first week of August. We'll be covering the entire PSM there with MCQs and concept building. You can use my code Dr. Neha 10 to get 10% off. Also, my first video was premiered yesterday on YouTube. It was AIMS PSM recall questions. Go have a look at this. Like, comment and subscribe to Unacademy. ठीक है? चलो start करें. All right. Okay. Please message your friends in between also. All right. The first thing is most common. Kabir, we'll be doing a poll. ठीक है? So let's first do a poll, and then you can poll in your answer, and then you can write it in the comment section also. Is it okay? All right. Chalo, most common reported disease in post-disaster phases. Yes, 71% of you have got it correct. ठीक है? Great. All right. Okay. So almost 80% have got it correct. Divya, good morning. We are at the first question. You can have a look. ठीक है? Most common reported disease in post-disaster phase is gastrointestinal infections. ठीक है? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है. It's a simple straight away question. Most important, most common reported disease in post-disaster phases GI infections, और mostly post-disaster phase में ये MCQ आता है. ठीक है? अभी पहले ये वाला आंसर करो. Most common vitamin deficiency noted in drought or after any disaster. ठीक है? So most common vitamin deficiency कौन सा होता है? These are simple must know questions जो आने ही आने चाहिए आपको. There is nothing to think about it a lot. Okay, so I see 50% have marked it correctly. This is very simple and an easy one. ठीक है? Most common vitamin deficiency क्योंकि malnutrition हो जाता है, खाने को नहीं मिलता है. There are a lot of things which leads to this deficiency. Okay, so I see almost 50% have marked it correctly. Please remember, yes, Shashank, infections are more prone, but अगर आपसे MCQ में पूछेंगे which is the most common vitamin deficiency, then it is vitamin A. ठीक है? So अभी post disaster phase से हमें दो MCQ मिल गए हैं.
ठीक है. One is most common infection post disaster phase. Okay, is most common infection post disaster phase is GI infection, and the second one is most common vitamin deficiency, ठीक है, post disaster is vitamin A. ठीक है, please send out message on your WhatsApp group. Shikha, kindly forward the message on WhatsApp group also. If some other students could come and join, it would be nice. All of you, please send out the links. It would be really nice. Thank you so much. Okay, chalo, now let us move on to the next question. Good morning, Srijana. ठीक है. All right. All are effective strategy of disease prevention and control in post-disaster phase, except vaccination for typhoid and cholera, safe drinking water, proper excreta disposal या chlorination. ठीक है. So बहुत ही simple है. मैंने पहले भी बताया इसका answer. We had done it via a different MCQ. So please try and answer this question. Very good. Yes, I see that you remember what we've taught earlier. Good, good. Almost everybody has got this correctly. Okay, so all are effective strategies. So we can close the poll. All are effective strategy of disease prevention and control in post-disaster phase. ठीक है, except क्या होता है बच्चों, vaccination for typhoid and cholera. Now, another question. Good morning, Abhi. Another question that could come here is all vaccines, this we've discussed earlier also, a quick revision, all vaccines, because आजकल ये repeat questions हो रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है. All vaccines contraindicated in post disaster phase, okay, except, okay, option में आता है tetanus, okay, typhoid, okay, measles and cholera. So let's quickly do a poll of this as well. These are just quick revision questions. इसमें ज़्यादा time नहीं लगाना है. Good morning, Deekshant. ठीक है, mark करो answers, guys. What is the answer to it? Very simple. Kabir has already put it on the comment section below. ठीक है. Okay, good. So all of you are aware of this, that all vaccines are contraindicated in post-disaster phase except for measles. ठीक है, क्यों measles contraindicated नहीं है? Can anybody put in the comment section below, or should I go to the explanation straight away? देखो, vaccines क्या करते हैं? Less incubation period. Okay, incubation period of what? Measles का जितना incubation period है ना, all right, which is 10 days. Okay, measles का yes, very good Kabir, incubation period is 10 days. ठीक है, जब आप वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हो, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनते हैं. सो जनरली द टाइम पीरियड फॉर दोज एंटीबॉडीज टू फॉर्म इज यूजुअली लाइक 6 to 7 to 10 weeks also. But measles is one such disease, or measles is one such infection, good morning Saath, जिसमें एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड within less than the incubation period of that disease. ठीक है, वो 7 days में ही vaccine induced antibody बन जाते हैं. That is why it is of use, isn't it? अगर ये बाद में बनते more than the incubation period of the disease, it is of no use. You will be wasting money, you will be wasting resources. In a resource deficit country like ours, we have to be very careful where and exactly what are the cost effective things we can do. इसीलिए the best method क्या होता है, आप safe drinking water का provision करो, proper excreta disposal, and most important is chlorination. ठीक है, chlorination. Deekshant, we are just on the second question. The first question I'll just show you was the most common reported disease in post-disaster phase. ठीक है, GI infections, and most common vitamin deficiency, vitamin A. All right. Okay, and this was the third one. All are effective strategy of disease prevention and control in post-disaster phase. सब कुछ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरिनेशन है, एक्सेप्ट वैक्सीनेशन फॉर टाइफॉइड, कॉलरा एंड टेटनस. गुड मॉर्निंग हर्षिता. अभी अब सबको समझ आ गया पोस्ट डिजास्टर फेज का क्वेश्चन? ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजास्टर कर ही रहे हैं, सो आई फॉरगॉट टू ऐड वन क्वेश्चन फॉर यू. आई एम पुटिंग इट राइट नाउ ओनली, सो यू कैन प्लीज
गिव मी द आंसर बाय डूइंग अ पोल, नॉट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, पहले हम पोल कर लेते हैं उसके बाद. ओके, नो, दिस हैज कम इन वन ऑफ द नीट पीजीज. ठीक है. ओके, नोडल सेंटर इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. वेरी सिंपल क्वेश्चन है एंड वेरी इजी. ठीक है, पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, चलो. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट अ पोल. बहुत ही सिंपल है. दिस इज हाउ वी डू क्विक रिविजन. फटाफट उस चैप्टर से जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस कर लो. ठीक है. ओके, what is the answer? What have you written? Okay, 60% have got it right. So good, we did this question. I'll give you 2 MCQs with this. Keep sending messages on WhatsApp also for students to come in. ठीक है, चलो. Should I go to the answer part straight away? Explanation. Okay, so सिर्फ 50% ने correct बताया है. Okay, let me see who got it correct. ठीक है, प्रबोध has got all questions correct so far. Kabir has 4 out of 5. Sai Sashank has 4 out of 5. ठीक है, good all of you. Okay, so nodal center in case of disaster management is district. दिमाग लगाने का ज्यादा जरूरत नहीं है. Obviously सब सेंटर CHC PHC नहीं हो सकता. ये लोग, the main guidelines are running after taking suggestions from SC, PHC and CHC. Is the main thing is being done by the district. Okay, and which ministry is in charge? Anybody now you can put in the comment section below. Which ministry is in charge for disaster management? Ministry of, yes, Prabodh, very good, Ministry of Home Affairs. ठीक है, this is a very important question. So Ministry of Home Affairs is in charge of this. Okay, so there was one disaster that took place. It was what? Chernobyl. It was the Chernobyl nuclear explosion. ठीक है, so question was Chernobyl nuclear explosion के लिए कौन सा chemical or this thing was responsible? Can you put in the comment section below? This will cover another important MCQ जो basically FMG में बहुत पूछते हैं and कभी कभी NEET PG में भी. Should I give the options or will you be able to put the answer for Chernobyl nuclear explosion? Should I give the option to you? Okay, मान लो ये है ऑप्शन बी इज तुम्हारा. ठीक है, मिथाइल आइसोसायनेट. ऑप्शन सी इज से सम यूरेनियम कंपाउंड्स. ओके, एंड ऑप्शन डी इज तुम्हारा से सीजियम कंपाउंड्स. Yes, so let's do a poll. Let's do a poll quickly. Give me the correct answer to this. This is an example of which form of epidemic? The next question जो बनता है. Very good. 62% सही बता रहे हैं अभी तक. और बताओ, अब ये और कम हो गया, 57% हो. गाइज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें दिमाग नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. So I'll go straight away to the answer. Less than 60% of you have got it correct. Less than 60% of you have got it correct. Yes. Okay, so this is due to methyl isocyanate. Okay, and this is an example of which type of epidemic? Can anybody tell me this is an example of which type of epidemic? Can you put it in the comment section below? Anybody? क्या किस तरह का एपिडेमिक है ये? वेरी गुड हर्षिता. इट्स अ पॉइंट सोर्स. इट्स अ पॉइंट सोर्स. Point source, very good. Single exposure point source epidemic. Any other example of single exposure point source epidemic जो आपको पता है? Any other example? Do you know? Yes. Do you know some other example of food poisoning? Very good. So here we revised another MCQ also, that single point source single exposure का epidemic is का example is all of these food poisoning. Now Kabir has written well water. चलो, अब since we've gone to this topic of this thing, मैं तुमसे एक question पूछती हूँ. Well water is an example of which type of epidemic? Kabir, are we going to drink water only one time from a well?
Which type? I will give you the option. Guys, don't put it in the comment section. Let us have an option. ये MCQ में आता है. Good that we've come to this discussion. Okay, so let me put it in the discussion over here. Okay, so is it a Prabodh? Wait for the MCQ. ठीक है? Is it a चलो now give me your answer from these three only. Suppose B D में option था none of the above. तो क्या है? Yes, it is. Answer करो. Good morning Pratap. Good morning Seman Saha. Very good. अब समझ में आया all of you? Can we go to the explanation part of it? It is very simple. ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये. Give me a high five if you've understood. It's a give me a thumbs up. Sorry, not a high five. Thumbs up. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. ये वेल है. वेल में कंटामिनेटेड पानी होता है. एक बार एक बंदा पिएगा, उसके बाद पीपल विल गो ऑन ड्रिंकिंग फ्रॉम इट. सो इट्स अ पॉइंट सोर्स बट continuous exposure. ठीक है, since we are on the question of epidemic, मान लो I give you a graph and I want you to identify this type of epidemic. Okay, so don't put in the comment section below, please put it in the I'm giving a poll. Okay, identify the graph or the image. ठीक है, this depicts number 1 point source single exposure epidemic. Option number 2, ठीक है, point source repeated और repeated exposure epidemic. ये full form समझ लोगे तुम लोग? ठीक है. 3 propagated epidemic or none of the above. So this is an example of which form of none of the above. Which form this graph depicts which type of epidemic. Can we go to the polling? चलो. All right. अब बताओ. Start marking. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइम है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस है. ओके, सो आई सी दैट 50% have got it correct. Good morning, Karuna. I see that 47% have got it correct. Good morning, David. ठीक है. All right, can we go to the explanation part? अब since we are doing the types of epidemic, हम quickly इसको revise कर लेते हैं along with the features of epidemic. It's very easy. Okay, can we go? Okay, so मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने गलत दिया है, less than 50%. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. Two most important graphs that you need to understand is एक point source single exposure epidemic और एक point source. ओके कबीर, आई टेल यू ऑर्डिनल नॉमिनल भी. ठीक है, अभी दो ग्राफ्स तुमको ध्यान में रखने हैं. एक पॉइंट सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, एक पॉइंट सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर या मल्टीपल एक्सपोजर या रिपीटेड एक्सपोजर. ठीक है, कैसे इनका ग्राफ बनता है. ठीक है, अभी देखो फर्स्ट लेट मी शो यू अ न्यू स्लाइड एंड शो यू. ठीक है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट सोर्स. ओके, सिंगल एक्सपोजर, एक ही बार हुआ है एक्सपोजर एपिडेमिक. सपोज इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड पॉइजनिंग. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज द ग्राफ. ओके, हियर दिस इज द टाइम, हियर विल बी द नंबर ऑफ केसेस जो भी आकर करेंगे. लोगों ने पार्टी में आके खाना खाया, आफ्टर सम टाइम ओके somebody falls starts having a stomach ache. ठीक है, so when there is a single exposure point source epidemic, okay, there will be a sudden rise in cases and there will be a sudden fall in cases. Okay, all the cases will cluster within one incubation period. This is explosive. This curve is explosive in nature. एक बार पार्टी में गए, एक ही बार खाना खाया, फूड पॉइजनिंग मान लो, स्टाफ पॉइजनिंग था, 6 hours incubation period होता है. Okay, so all of them will fall. I'll tell you, all of them will be exposed to that food poisoning wala thing within one incubation period. So what are the features of this graph? This graph tends to be explosive. There is sudden rise and
sudden fall in number of cases. Good morning, Yash. ठीक है, sudden rise and sudden fall in number of cases. All cases cluster within one incubation period. Okay, all this is asked in MCQs. All of the features, all are features of point source single exposure epidemic, except, ठीक है, good morning Ayan. So all cases cluster within one incubation period and there are no secondary waves. How many of you know what is the meaning of this secondary waves? Put in the comment section below if you know. If you don't know, still put, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोगों को पता है सेकेंडरी वेव्स क्या होता है. ओनली दीक्षांत हैज आंसर्ड, ही इज नॉट अवेयर. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आर सेकेंडरी वेव्स? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो व्हाट आर सेकेंडरी वेव्स? ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इन अ सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक वी डू नॉट हैव सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है. वेरी गुड कबीर. अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या है, देखो एक ही पीक बना, ठीक है, एक ही वेव दिखा, isn't it? So this is the primary wave. एक ही वेव मुझे इस कर्व में दिखा है. All right, so these features stand for point source single exposure point source epidemic. Okay, all the cases immediate suddenly they rise, all the cases suddenly they fall, all of them cluster within one incubation period. There are no secondary waves. ठीक है, अब वापस चलो इस वाले स्लाइड में, इस वाले ग्राफ में. ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस है. ठीक है, अभी लोग क्या एक गांव में थे, पीपल लिव इन अ विलेज, हियर दिस देयर इज अ वेल, दिस हैज गॉट कंटामिनेटेड. टाइफॉइड गंदे पानी पीने से होता है, कॉलरा, ऑल दीज इन्फेक्शंस आर वाटरबॉर्न डिजीजेस. ठीक है, so now what happens is that people of this village are drinking water from this. ठीक है, अभी क्या हुआ, one person falls ill. ठीक है, एक पर्सन फॉल इल हुआ, 10 लोग इस विलेज से, इस कॉन्टामिनेटेड वेल से पानी पी रहे हैं. सो देयर इज अ राइज इन केसेस. ठीक है, गुड मॉर्निंग आनंद. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस रिप्रेजेंट्स वन इंक्यूबेशन पीरियड. Okay, these represents, these multiple waves represent secondary waves. ठीक है, लोग यहां से पानी पी रहे हैं, ग्रेजुअली केसेस कम हुए, बट पीपल स्टिल कंटिन्यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस वेल, तो फिर से केसेस बढ़े. गुड मॉर्निंग एम्फम. ठीक है, फिर से केसेस बढ़े, फिर कम हुए. पीपल आर कंटिन्यूइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस वेल and the cases will continue to rise and fall with a number of waves until and unless this problem is treated. Okay, is it? I'll tell you, Kabir, what is propagated also. Wait, do you get this funda clear now? ठीक है, so when you talk about क्या point source repeated exposure, तो gradual rise in cases होता है. Okay, they are not explosive, they tend to cluster, okay, within many incubation periods. Okay, they tend to cluster within many incubation periods. ठीक है, and the important feature is कि आपके पास secondary waves बनते हैं. So they ask you in the question that all are features of say single exposure repeated single point source repeated exposure epidemic except. ठीक है, सो अब तुम इसको आंसर कर लोगे. अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एनीबडी. आई हैव रिटन द फर्स्ट टू वर्ड्स पीएल. पीएल मतलब एनीबडी. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज प्लेटू फेज. ओके, सो केसेस बढ़े, कम हुए, फिर बढ़े, कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए. ठीक है, सो इट लाइक अटेन्स अ प्लेटू. जब तक हम इस वेल को ट्रीट नहीं कर देंगे तब तक ऐसे ही चलेगा. नाउ डू यू गेट इट? Are you clear with this? These multiple peaks represent secondary waves and also represent multiple exposure. Now is it clear? Give me a thumbs up if it's clear to each one of you. Multiple, I want more thumbs up telling me that this is clear. Multiple peaks represent multiple exposure. ये बहुत important है guys. ये question एम्स हो, PGI हो, जिपमर हो, कोई भी एग्जाम हो. ठीक है, ये एपिडेमिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड दे लव गिविंग सच क्वेश्चंस. एंड नाउअडेज वी नो दैट वी गेट इमेज बेस्ड एमसीक्यूज, तो ये इमेज तो आना ही आना है.
ठीक है, समझ में आया? अभी कबीर मुझसे पूछा, ही रोट समथिंग अबाउट प्रोपगेटेड एपिडेमिक, ठीक है। चलो मैं तुमको फटाफट प्रोपगेटेड एपिडेमिक का भी आई शो यू द कर्व, सिंस वी हैव जंप्ड टू दिस टॉपिक, व्हाई नॉट शो यू द कर्व फॉर ऑल द थ्री, ओके। चलो ओके, अब देखो प्रोपगेटेड एपिडेमिक में कैसा होता है। प्रोपगेटेड एपिडेमिक में ना यू विल फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस विथ मल्टीपल हम्प्स। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ प्रोपगेटेड एपिडेमिक? इसको क्या बोलते हैं? जैसे एन एपिडेमिक ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? these are the things, these are the points. What are these calls? Okay, person to person transmission, propagated epidemic. Yes, लिखित में क्या होता है ना, suppose there is one person, he suffers from say we could say TB, ठीक है, और ही सफर्स फ्रॉम से पोलियो, ठीक है। अभी क्या होता है, ये पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्प्रेड इन्फेक्शन टू समबडी एल्स अंटिल ही मीट्स अ सेकंड पर्सन whose immunity is very poor, okay, yes, whose immunity is very poor, plateau phase persists for long, yes, इसका immunity बहुत poor है, तब ये इसको infection देगा। ऐसे ये काम पे जाएगा, वहां पे उसको कोई इंसान मिलता है जिसका immunity बहुत poor है और nutritional deficiencies है, he will be able to transmit the disease to that person. Good morning Murali. So बहुत ही gradually what is happening, the disease is propagating from one person to another. So what are the characteristics of a propagated epidemic? It is that epidemic curve, okay, rises and falls, okay, gradually over a period of time. Is it clear? Is it clear? Over a period of time. Epidemic curve rises gradually and falls over a period of time. And upslope, ये चीज को क्या बोलते हैं? This is upslope and this is downslope. So these upslope and downslope, okay, these upslope and downslope are not smooth. Okay, there are a number of bumps in it. So अगर एक simple नया MCQ बन जाए that bumps associated epidemic curve is or hunch associated, so it is for a propagated epidemic. All right, please remember, एक incubation period के बाद कुछ cases develop होंगे, after another incubation period कुछ cases develop होंगे. So this is only possible when you'll be able to pass the disease to your close contacts. Okay, finally it declines. यहाँ पे फाइनली क्यों डिक्लाइन हो गया ये कर्व? फाइनली इसलिए डिक्लाइन हो गया बिकॉज ऑल द पर्सन्स इन द पॉपुलेशन हु आर ससेप्टेबल हैव गॉट द इन्फेक्शन. Now do you get it? Now did you understand all the three types of epidemic with the figures? ये आज के टॉपिक में नहीं था, बट दिस इज हाउ पीएसएम गोज, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में हाउ डू वी जंप एंड हाउ डू वी लिंक थिंग्स. इज इट क्लियर? गिव मी थम्स अप इफ यू क्लियर विद पॉइंट सोर्स, single exposure epidemic, point source, repeated exposure or multiple exposure epidemic and propagated epidemic. ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चन सिंपल आएगा, या तो आइडेंटिफाई द इमेज बोलेंगे which type of epidemic it represents, या yeah, it can also be which type. See, cholera देखो kind of is usually a disease जो फूड बॉर्न है या वाटर बॉर्न हो जाता है, ठीक है. सो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट यू, इट कैन नॉट कम अंडर प्रोपगेटेड एज सच. ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर द इमेज. हेलो, इज इट नाउ क्लियर? मुराली, इज इट नाउ क्लियर? हेलो, you it will come under multiple exposure, ठीक है. Is it now clear? Okay, chalo, can we move to the next MCQ now? Very simple and very easy. Okay, the are you ready to start polling? Give me a thumbs up. Can we go to this very simple easy PSM MCQ? NEET PG में भी आया है. The interval between a primary and a secondary case is known as, ठीक है. So फटाफट mark करो. We need to do as many questions as possible. Yes.
Okay, still I see 50% have got it correct. Okay. All right, please send messages in your WhatsApp groups also for some other students to join. FMG के लिए भी बहुत important है. Shikha, if you're there, you can send the message if you've answered this. Okay, chalo. So I see that most of you are not clear with this topic. और ये मैंने शायद एक बार और किसी क्लास में बताया है. For those who have missed, we'll repeat it again. All right, so interval between a primary and secondary case is nothing but a serial interval. बहुत easy सवाल है ये. Very good, कबीर. ठीक है. Incubation period क्या होता है? The time interval between entry of organism and the appearance of first sign and symptom. Everybody is clear with incubation period? ठीक है. Latent period क्या होता है? देखो, incubation period is basically a terminology for communicable or let's say infectious diseases. ठीक है. Similarly, latent period क्या होता है? It is a similar term when we talk about non-communicable diseases. ठीक है. So latent period आता है when we are referring to non-communicable diseases. ठीक है. अभी बताओ generation time क्या होता है? Generation time is the time interval between entry of an organism, ठीक है, entry of an organism, all right, and what else? And maximum infectivity. Is it clear to each one of you? Organism enter किया and the maximum infectivity, that is known as generation time. Is it clear to each one of you? ठीक है. तो बचा क्या? सीरियल इंटरवल. सीरियल इंटरवल होता है, डू आई हैव अ स्लाइड हियर? यस. सीरियल इंटरवल इज नथिंग बट, SI इज नथिंग बट द गैप बिटवीन, what was the question here? Look, interval between a primary and secondary case. ठीक है. Primary case and secondary case. Now what is primary case? Everybody knows that the first case of an infectious disease or a communicable disease, first case introduced into the population. Is it okay with everybody? Everybody knows this, है ना? But can anybody tell me what is index case? This is a very repeated question of for FMG also and NEET PG also. Index case क्या होता है? Guys, put in the comment section if you know. How many of you know it? Yes, very good, awesome. Index case होता है the first case to come to the notice of an investigator. ठीक है. This is the index case. All right, guys. और secondary case क्या होता है? The number of cases that develop after exposure to a primary case within one incubation period. Simple. समझ में आया? Okay. Number of cases that develop, okay, after exposure to a primary case, all right, within one IP incubation period. Is it clear? Murali, BKS, very good. Everybody, is it clear? ठीक है. अभी मैं एक MCQ डाल रही हूँ, just a quick revision, all right. Don't put it in the comment section below. First see the question and start polling. Communicability of a disease is given by which index or represented by which index? NEET PG का favorite question है ये. Case fatality rate, okay, secondary attack rate. Please wait for the poll. Okay, third, incubation period. Fourth, relative risk. Chalo, quickly give me the answer to this so that we can move ahead to the next question. Poll. Start polling, guys, quickly. Communicability of a disease is given by which? Okay, I see. Okay, great. ठीक है. और लोग आंसर दो. All right. So can we go to the explanation part of it? Good morning, Viveka. ठीक है. चलो. So the explanation to this is very simple and it's very easy. Okay.
communicability of a disease is given by an indicator which is secondary attack rate, or infectiousness of a disease is given by an index which is secondary attack rate. ठीक है, एक स्लाइड बना के मैं तुम्हें फॉर्मूला इसका लिख देती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी अटैक रेट इज नंबर ऑफ केसेस, ओके, दैट डेवलप, okay, after exposure to a primary case within one incubation period divided by the total number of susceptibles in the population into 100. Is it clear? ठीक है. सेकेंडरी अटैक रेट दो डिजीज का बहुत पूछते हैं, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स. ओके, चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक रेट 90% है, मीजल्स का 80% है, एंड दिस इज मोर कम्युनिकेबल. Okay, is it clear? Okay, if I ask you virulence of a disease is represented by, put in the comment section, virulence of a disease is represented by which index? Comment section में डालो, comment section में इसका आंसर डालो. अभी ये previous option में भी था. Very good दीक्षंत, very good Sarth, very good Prabodh, everybody knows this. Okay, case fatality rate. ठीक है, case fatality rate क्या होता है? Number of deaths, okay, due to a disease, all right, divided by number of cases due to that disease, okay, into 100. All right, quick revision. Is case fatality rate a rate, ratio, or a proportion? Put in the comment section below those who remember it. Case fatality rate, rate है, ratio है, proportion है. Proportion, very good. So all of you remember this. Why? Because in case fatality rate, numerator is a part of denominator, but our multiplier is 100. कौन से फॉर्मूला पे कबीर? कौन से फॉर्मूला पे? Okay, so I already put a question, Kabir, कि तुम्हें दो disease दे देंगे and they can straight away ask you which has more secondary A rate. Okay, Dikshant, I'll explain which has more secondary rate, which disease out of the following. Good morning, Tejas, Balaji, or they can also give you simple numerical and ask you to calculate. Okay, Kabir? All right. Dikshant, केस न्यूज स्लाइड में बता देती हूँ. केस फैटेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट, व्हाई इज इट अ प्रोपोर्शन? बिकॉज देखो रेट में क्या होता है, न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है. रेशियो में क्या होता है, सिंपल न्यूमरेटर. आर यू विद मी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विद मी. न्यूमरेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है. प्रोपोर्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रेट एंड प्रोपोर्शन? ठीक है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर का पार्ट है, but the difference is that in rate the multipliers are in thousand or lakhs. ठीक है, but in proportion the multiplier is in 100. तो केस फैटेलिटी रेट में अगर तुम पुराने स्लाइड में जाओगे, फॉर्मूला देखोगे, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ डिजीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू दैट डिजीज. Okay, so numerator is a part of denominator, but मेरा multiplier here is 100. That is why this becomes a proportion. Another example of a proportion is prevalence rate. Is it okay everybody? Prevalence rate इसमें बहुत पूछता है PSM NEET PG में. Prevalence rate में new cases plus old cases divided by total population into 100. So numerator is a part of denominator, but multiplier 100 हो जाता है. ठीक है, चलो let's go to the next MCQ. Are you clear with the topic so far discussed? ठीक है, चले आगे बढ़े. All right, very simple. इससे सिंपल कुछ नहीं आएगा, और ये अभी एम्स में भी लास्ट ईयर आया है. So let's HDI includes all except. ठीक है, चलो mark this answer. HDI includes all except. Guys, this
none of you can make a mistake. ठीक है, ये मस्ट नो है. पीएसएम हम शुरू ही करते हैं दो चीजों से, पीक्यूएलआई और एचडीआई. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ वाले चैप्टर में से these two topics are the most loved. ठीक है, स्टिल आई सी दैट, और बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट अराइजेस विद दिस क्वेश्चन. सो नन ऑफ यू कैन, it is a easy question but I see that everybody has not got it correct. ठीक है, चलो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. Is my voice clear अभी everybody? Is my voice audible? Okay, चलो ठीक है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. HDI includes all except adult literacy rate, per capita income, life expectancy and infant mortality rate. infant mortality rate, ठीक है. क्यों infant mortality rate किस चीज का इंडिकेटर है? Anybody can you put in the comment section below? Human development index के साथ साथ what do we study? Another thing, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. ठीक है, हम दो चीजें साथ पढ़ते हैं हमेशा, HDI and PQLI. These are indicators of quality of life, okay, or indirectly development of a country, like he's writing. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. सो HDI क्या होता है? लेट अस क्विकली सी एंड देन I've made a table also where you can compare both HDI and PQLI. Keep that table in mind. You're done with this question. Murali, you can access the recorded version also. Try to stay in the class, listen या दिखती रहो जितना भी दिख रहा है. ठीक है, and then you can download the recorded section as well. Is it okay, Murali? Okay, Murali, okay. ठीक है, चलो guys, अभी हमको क्या पढ़ना था? HDI. Okay, HDI stands for, कुछ एग्जामिनर को जब नहीं समझ आता ना क्या क्वेश्चन डाले, वो उठा के ये डाल देता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या PQLI, क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं. हर एग्जाम में देख लो, यू विल फाइंड दिस. इट वाज आस्क्ड इन जिपमर आल्सो. ओके, HDI में क्या होता है ना, दिस इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स, ओके, दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ 3 डायमेंशंस. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. 3 डायमेंशन होते हैं इसका. एक होता है तुम्हारा नॉलेज, ओके, एक होता है तुम्हारा इनकम, और एक होता है तुम्हारा लॉन्जिविटी. अभी आई विल शो यू द कंपैरिजन विद PQLI आल्सो. ओके, सो नॉलेज में क्या होता है? नॉलेज में तुम्हें एक एजुकेशन इंडेक्स निकालना होता है. ओके, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 थिंग्स, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ओके, एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग. ठीक है, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग. सो बहुत बार आपको ये दे देते हैं दैट एजुकेशन इंडेक्स in HDI includes which parameters. Okay, so please remember this. इनकम के किस में यूज किया होता है? इनकम इज रियल पर कैपिटा, और जीडीपी का बात कर लो. ठीक है, इन PPP, परचेजिंग पावर यूनिट्स, ओके, इन US डॉलर. एंड लॉन्जिविटी के लिए हमारे पास क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. गुड मॉर्निंग निसार्गा. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ये सबको क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू विल रिमेंबर दीज 3 थिंग्स, नॉलेज, इनकम, लॉन्जिविटी. लॉन्जिविटी इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, प्लीज रिमेंबर. ठीक है, तो HDI को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज नथिंग बट अ समटाइम्स in AIMS paper they had given this formula, okay, and they had asked you to identify the correct formula. That is why I am telling you now. ठीक है, HDI क्या होता है? Geometric mean of 3 dimension index. ओके, सो इसमें तुम्हारा 3 डायमेंशन इंडेक्स क्या हो जाता है? यू विल हैव ऑफ लॉन्जिविटी I 1/3 ऊपर डालोगे, ऑफ एजुकेशन एंड I ऑफ income. Please remember this formula. This is the geometric mean of 3 dimension index, और ये तुमको पूछते हैं. ठीक है, यूनिवर्सिटी में यू विल गेट टू कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम, जो इसका एक्चुअली हर एक ये मैं लिख ही देती हूँ जस्ट इन केस इन सम एग्जाम कभी पूछ लिया. ओके, डायमेंशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम? वॉट एवर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कंट्री, वॉट एवर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, ऑफ
of the country that we've taken as reference divided by maximum value minus minimum value. Nobody is going to give you to calculate this, chances बहुत कम है. Still ये formula को याद रखना, ठीक है? All right. Should I tell you the values? Do you want me to tell you the values for maximum, minimum, or is it okay? Can we go to the comparison chart? Do you want me to tell you the values? Question comment में लिखो या हम ठीक है तो मैं तुमको बता ही देती हूँ. Minimum value, it will just take us 1 second. Minimum value and तुम्हारा revision भी हो जाएगा. And this is your maximum value. ठीक है? अभी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? Suppose life expectancy, my first index. Then what is my index? Education. ठीक है, इसमें दो आएगा, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड लास्ट में क्या था गाइस? इनकम. ठीक है, रियल जीडीपी में. ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिनिमम वैल्यू इज 20, मैक्सिमम वैल्यू इज 85. ओके, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग मिनिमम वैल्यू 0, एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली 0 ही होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम में 15, 18, एंड रियल जीडीपी में दिस इज 100 एंड दिस इज 75,000. Okay, this is in US dollars. Nobody, there's very less chance कि कोई तुमसे ये पूछेगा. If you forget this, it's okay. But क्या नहीं भूलना है, ये तीन जो चीजें इसमें यूज होती हैं HDI में, composite index में जो आती हैं, and this formula. ठीक है, अब तुमको हर एक इंडेक्स का डायमेंशन इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट करना होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट व्हिचएवर कंट्री यू आर टॉकिंग अबाउट. इज इट ओके? कैन वी गो टू द कंपैरिजन? कैन वी गो टू दिस टेबल? इज इट ओके? ऑलराइट, अब इसमें देखो, यहाँ पे मैंने तुमको सब लिख दिया है. ओके, HDI, PQLI, what is the difference between the two? Okay, so in HDI your components is longevity, which is life expectancy at birth. In physical quality life index, what is your component? Life expectancy at 1 year. Don't get confused. ठीक है, इन HDI तुम्हारा नॉलेज हो जाता है या एजुकेशन इंडेक्स है, इट्स द सेम. लिटरेसी रेट यहाँ पे भी इट्स लिटरेसी रेट. ओके, द डिफरेंस दैट लाइज इज इन HDI वी टॉक अबाउट इनकम, यहाँ पे वी टॉक अबाउट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. PQLI में फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसमें इनकम नहीं है कबीर. ठीक है, इट इज नॉट देयर. Okay, we have three things: life expectancy at 1 year, literacy rate, and infant mortality rate. Is it clear to everybody? Okay, then we need to talk about the range. ये जो range देख रहे हो ना, ये बहुत ही important vital MCQ है. vital MCQ. और range में confused हो जाते हैं. जब मैं exam देती थी, I also got confused. ठीक है, so range of HDI is, फिर से यहाँ लिख देते हैं, HDI is 0 to +1. ओके, एंड रेंज ऑफ PQLI कितना है गाइस? 0 to 100. ठीक है, इंडिया का भी रैंकिंग है 65, एंड HDI में ये पूछते हैं, दे डोंट आस्क PQLI का रैंकिंग, बट दे आस्क यू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सो इंडिया रैंक्स 130, अभी हुआ है लास्ट ईयर. Okay, which country ranks the highest? Anybody, can you put in the comment section below? HDI में कौन सा country highest है? N is Norway. Very good. Norway. कितना है इसका score? 0.95. ठीक है, सोलंकी. Very good. All right. So this was, इसमें ना 10 इम्पोर्टेंट हम डाल सकते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टेबल. एग्जाम से एक दिन पहले जरूर नजर मार के डाल जाना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, स्वीडन, आई डोंट नो व्हाट इज द रैंक एज सच. ठीक है, बट दिस क्वेश्चन में जो पूछेगा ये मैंने तुमको बता दिया है. द करेंट इंडिसेस, द components, the range and the rank. Will everybody be able to solve this? Give me a thumbs up if you will be able to solve this. हाँ, ठीक है. Okay, चलो. Okay, can we move to the next question? चलो, next question. Starting the poll. Mark the answer quickly. Mark the answer quickly. One of the left. Good morning, Ananya. Mark the answer quickly. One of the left questions. One of the,
गाइज रीड इट केयरफुली. तुम पढ़ते नहीं हो, तुम फटाफट आंसर मार्क कर देते हो. पढ़ो उसको. ड्रग, एक तो हम ड्रग बोल रहे हैं, दो ड्रग हम रैंडमली सिलेक्ट भी बोल रहे हैं. देर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इट. They've deliberately given this question to confuse you. Good morning, Riya. ठीक है, अभी कबीर को 11 मिले हैं 12 में, दिव्या एंड को 10, प्रबोध को 9. ओके guys, see, good morning soul mortal, nice name. Okay, all right, so the question is, in a prospective study, 1200 patients, 1200 patients were randomly selected to study the effect of a new drug. The drug will be given for 5 years, okay, and its association with cataract will be studied. What type of study is this? Now, they have deliberately put this line to confuse you, जिसकी वजह से you ended up marking cohort. The answer is a randomized clinical study. कभी भी ड्रग आएगा ना, ड्रग इज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग, ओके, इज अ इंटरवेंशनल थिंग. इट्स, हम किसी 1200 पेशेंट को रैंडमली सिलेक्ट करके वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग. We are giving an intervention. There is nothing to think about it. Obviously, drug को हम कुछ साल देंगे, then only we can see the assessment or the outcome. That doesn't mean it's a cohort study. Please remember this. सी कि हम स्टडी में कर क्या रहे हैं, हम स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है उसमें, वी आर गिविंग एन इंटरवेंशन और एन एक्सपेरिमेंट. इज इट क्लियर गाइज? देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इट सो मच, इट्स वेरी बेसिक. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? और यहाँ पे वर्ड इन्होंने प्रोस्पेक्टिव दे दिया, तुम फिर से कंफ्यूज हो गए. यहाँ पे ये देखो कि हम वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग. Effect of a drug is nothing but a randomized clinical trial. It is an intervention. ठीक है? Can we go to the next question? Is it okay for everybody? Can we move to the next question? Great. बहुत easy है. जो बच्चे मेरा FMG क्लास कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको आंसर करेंगे. I want rest of you also to answer. Very simple and very easy. फटाफट आंसर करो. Purpose of randomization is eliminates selection bias, eliminates confounders, both, none of the above. Okay, since we are running out of time, can we go to the explanation? Can we go to answering more questions? ठीक है? Okay, so it eliminates both. Okay, so the answer to this is both. एक मिनट, एक और MCQ है, पहले इसको भी कर लो, then we'll quickly talk about randomization. Okay, best method of randomization is, start your poll quickly. Best method of randomization is lottery, flipping the coin, table of sorry, it's random numbers, not errors. Sorry guys, ये है तुम्हारा table of random numbers. Picking the chit method. ठीक है, so we are straight away moving to the we'll straight away move to the explanation part. Okay, best method of randomization is table of random numbers. Let's see if we have another MCQ. So we have answered these questions. Heart of a randomized control trial is randomization. Best method is a table of random numbers. Okay, table of random numbers. What is the purpose? It is doing two things: eliminates selection bias, okay, and ensures comparability, okay, and it eliminates what else? It eliminates confounders. ठीक है? What is randomization? Does anybody of you remember what is randomization? Randomization में I am actually dividing my study groups into two groups, okay, randomly into two groups, intervention group and reference group. Is this much clear to you? Give me a thumbs up if this is clear to you. ठीक है, हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, इंटरवेंशन एंड रेफरेंस ग्रुप. इंटरवेंशन में हम कुछ इंटरवेंशन देते हैं, लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल वी आर डूइंग अ ड्रग ट्रायल, ओके, एंड रेफरेंस ग्रुप है जिसमें हम उनको वो ड्रग नहीं देंगे, वी माइट गिव देम अ प्लेसिबो दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दैट ड्रग. Okay, so this is randomization. Randomization denotes another MCQ. Okay,
you have to poll this, okay? Unequal and unknown chance, ये नीट पीजी में आया हुआ है, ठीक है? Equal and unknown chance, ठीक है? Option C is equal and known chance, and option D is unequal and known chance. फटाफट इसको पोल करो and tell me the answer to this. What is the answer to this? Randomization means, okay, it's just a revision, all right? Okay, so we can move forward. We had done this yesterday. Okay, ठीक है. So randomization means equal and known chance. Okay, so we can go to the next question as we've discussed it yesterday. Randomization, yaad rakhna, eliminates selection bias and eliminates confounders. Also, randomization means equal and known chance. Thank you, Dikshant, for reminding me. All right, simple. I'm not going to explain this. You're just going to mark the correct answer. Analytical study where population is the unit of study is, chalo batao quickly. What is the analytical study where population is the unit of study? Yes, so I'm sure most of you know this. The answer to this is ecological study design. Very good. Okay, can we go to the next MCQ? Yes, Likhit, blinding is a method to remove bias. I think I have that question. Can we go to the next MCQ? ये सबको आता है. Rest all the study designs have individuals as unit of study. Can we go to the next study design? Can we go to the next question? Give me a thumbs up. Okay. Okay. पहले हम एक blinding का question कर लेते हैं. Okay, then we'll go to that retrospective cohort. Since Likhit has asked us here, bias is removed by which process? Okay, bias is removed by which process? Mark your correct answers. Bias किस process से remove होता है, guys? Bias is removed by blinding. Very good. Bias क्या होता है? It is simply a error that arises when you are designing, when you are conducting, when you are making an analysis of your study. ठीक है? So, इसका correct answer is bias is removed by a process known as blinding. Matching is done to remove. Put in the comment section below. Matching किस study design में हम करते हैं and what is it done to do? Put in the comment section below. Matching किस study design में use होता है? Very good. Confounding factors. Or matching is done to eliminate confounders. Okay, and that is done in a case control study. But हम matching से we can only eliminate the known confounders. Unknown के लिए हम randomization करेंगे. ठीक है? एक और bias का question है. Answer this. Then we'll go to that last question of retrospective cohort. Okay? So I'm starting a poll. Hawthorne bias is associated with study design. Come on, this is a very kind of important MCQ. Hawthorne bias क्या होता है? It is study with, it is associated. If you don't know this, nothing to worry. ठीक है? Hawthorne bias क्या होता है? No, Kabir, it's not hospital. Hospital wala bias, there is another term for it. Okay, let's go to the explanation. We're running out of time. तो 50% से कम बच्चों ने इसको सही आंसर किया है. ये नीट पीजी का सवाल है. एफएमजी में तुमको सिंपल पूछेंगे ब्लाइंडिंग किसको एलिमिनेट करता है, इंटरव्यूअर बायस किसमें देखते हैं. ठीक है. ओके, सो अभी प्रबोध इज लीडिंग 15 out of 18, कबीर 15 out of 18 and somebody whose title is user 13 out of 18. ओके, देखो Hawthorne bias is seen with the cohort study. What is Hawthorne bias? See, cohort study में हम क्या करते हैं? We have divided our participants into two groups, है ना? Exposed and non-exposed. Okay, now these people, okay, very good, attention. Just say, if you know what happens, that the study participants may purposefully, look what I'm writing here, they may purposefully alter their behavior, okay, when they know they are being observed. Is it clear to each one of you?
Okay, they may purposefully alter their behavior when they know that they are being observed. Like जो मान लो हम smokers and non-smokers कर रहे हैं, the smokers may quit smoking thinking that he is being observed, and this will hamper the result of my study. Now everybody is clear. That is what is known as Hawthorne bias. ये बहुत loved MCQ है. Okay, this is like a loved MCQ of examiners. ओके हम लोग भी जब क्वेश्चन सेट करते हैं वी आर टू मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफन उनको नहीं पता होता है इसका मीनिंग. ओके, सो नाउ इज इट क्लियर टू यू? एंड ठीक है. ओके, सिंस वी आर आउट ऑफ टाइम, एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ. आई डोंट वांट यू टू मिस दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई वांट ईच वन ऑफ यू टू गिव द एन आंसर टू दिस. सोचो, बिकॉज ये बहुत बार बच्चे हमसे पूछते हैं. Okay, Likit will be discussing the bias in the class today. ठीक है, शाम में हम discuss करते हैं उसको. Alright, let's discuss this right now. इसको answer करो. Retrospective cohort study design is better than prospective cohort study design in demonstrating causality. Okay, what is the reason for it? Chalo, start polling. Why is a retrospective cohort study design better than a prospective cohort study design in demonstrating causality? Reason क्या है? 50% से कम answers correctly दे रहे हैं. चलो, should I go to the explanation part of it? Should I go to the explanation part? ठीक है, because मेरे पास time कम है. Okay. So 50% बच्चों ने इसको करेक्ट जवाब दिया है. All right. Okay. So I can tell Prabodh has scored 16 out of 19. Kabir 15. Some user who has this thing as a user 14. Now very important. इसका आंसर है shorter duration. Quickly I'll make you explain this क्योंकि आप बहुत confuse होते हो. Retrospective cohort, prospective cohort. देखो, सबसे पहले मैं एक image बनाती हूँ. I yesterday also told you, or in some class I've told that वो image based MCQ भी आता है. ठीक है, prospective cohort study में क्या होता है? ऐसे मेरे पास population है, exposed है, non-exposed है. Follow them over a period of time to see who develops disease, who do not develop disease. Please understand these full forms also. Okay, develop disease, do not develop disease. Okay, this is a forward-looking study. We are following them over a period of time. तो अभी क्या हुआ? हमने आज स्टडी की, we followed them over a period of time. इस बीच मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. That could be my cases, my study subjects might drop out. Okay, seeing that it's such a long period, this will be very expensive to me. Okay, and it will be of a longer duration. Isn't it? Are you clear so far? Give me a thumbs up if you're clear so far with this question. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ टैकलिंग ड्रॉप आउट्स, द प्रॉब्लम ऑफ टैकलिंग एक्सपेंस, यू नो, कि एक्सपेंसिव ना हो और छोटा ड्यूरेशन का हो जाए, वी केम अप विद व्हाट इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट. ओके, is it okay to everyone? We came up with what is known as retrospective cohort study. ठीक है, इसमें मैं क्या करती हूँ ना, please remember, cohort study is a very good study design because it helps you calculate incidence of a disease. It helps establish temporality. ठीक है, that means effect precedes cause precedes the effect. So obviously हम इतने अच्छे study design को we just can't let it go, right? So to manage this problem of longer duration dropouts, we came up with the design of retrospective cohort study. ठीक है, retrospective cohort study में मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया. हम अभी भी, since it's a cohort study, we are going to compare exposed with non-exposed. This is the मूल मंत्र of a cohort study. कोई भी तरह का कोहॉर्ट स्टडी आ जाए, आप कंपेयर एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड को ही करोगे. समझ में आ रहा है? पर हम इसमें किए क्या? Suppose today is 2020. I will start my study in 2020. The outcome has not yet occurred. I want to see how many students जो 2010 में एक यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व थे, एक यूनिवर्सिटी में एक बैच में थे, 2020 में उनमें कितनों को हार्ट डिफेक्ट या लंग कैंसर हुआ है. ठीक है,
So I just go back in time retrospectively. I look at, say, the population registries, or say suppose hospital registries or something, and I assess their exposure status. Okay, and I come back again and determine the outcome currently. When this means that the outcome is determined when the study begins. Now is it clear to you? Okay, we are still comparing exposed and non-exposed by going back and looking at some registers, registries, so on and so forth. But we are determining the outcome at the time the study begins. Is it okay? Give me a thumbs up if you've understood this. Give me a thumbs up. So हम क्या इसमें समझ रहे हैं कि हम आउटकम को 2020 में ही हमने इसको वो किया, ठीक है? Yes. Now suppose we follow, यहाँ पे हमने outcome determine किया. Now if we follow this cohort further to develop, see 2 साल बाद इस cohort में और क्या diseases या events develop कर जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं mixed cohort. Okay, or we say it prospective, retrospective. Is it clear? Is it clear so far? I'll tell you the difference from case control. दीक्षण, ठीक है? अभी समझ में आ गया तुमको? हाँ, समझ में आ गया तुमको कि हमने 2020 में अपनी स्टडी शुरू की. हमने एक्सपोजर स्टेटस इन 2010 we assessed this. We again came back, we compared exposed with non-exposed, which is the मूल mantra of cohort study, and we determined the outcome, okay, at the time the study began. Now is it clear? If we follow this cohort even further, say 2 साल बाद, 2 साल बाद हम इस पे देखते हैं what disease or event occurred, okay, then this becomes a mixed cohort, or we say it as a prospective and retrospective study design. Now is it clear? Okay, one last question ki what is the difference from a case control study? ठीक है, प्लीज रिमेंबर केस कंट्रोल में हम कंपेयर कर रहे हैं cases with control. There is no question of exposed with non-exposed. जैसा तुमने retrospective में देखा. Case control में this is my population. Please remember outcome has already occurred. All right. आपने इसको divide किया cases में, control में. आप पीछे के रजिस्टर से देखें कितने लोग एक्सपोज्ड थे, कितने नॉन एक्सपोज्ड थे, ठीक है? यहाँ पे भी कितने एक्सपोज थे, कितने नॉन एक्सपोज थे. बस आपने ऑड्स रेशियो बता दिया एज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन. आपने और कुछ नहीं किया. बट रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में क्या होता है, आपका आउटकम हैज नॉट येट अकर्ड. यू गो बैक इन टाइम to see exposed, non-exposed kitne the. You come back again in 2020 and you determine the outcome at the time the study begins. In case control, outcome has already occurred. You just want to see how many were exposed and how many were not exposed. Yes, historical data seen. Very good. Do you get this concept? Give me a thumbs up if you've understood this concept. I want more people to tell me that they've understood it. ये बहुत important है. तो अगर हम एक बार वो वाले MCQ पे चले, देखो, why retrospective cohort study is better? Is it a better measure of strength of association? No, that is same for retrospective and prospective. That will be relative risk for both the types of study design. ठीक है? Does this need fewer subjects? No, nothing like this. In establishing temporality, no, both are establishing that cause precedes effect. ठीक है, सब ये दोनों टाइप एस्टैब्लिश कर रहे हैं. द फायदा और द एडवांटेज इज दैट इट इज ऑफ अ शॉर्टर ड्यूरेशन. Okay, so are you with okay? Are you fine with today's class? Give me a thumbs up if you've understood the topic. Again, I'll be having, I think, a YouTube free class. Maybe we've not scheduled it yet. Today or not today, tomorrow or day after. Please come join me in my YouTube first special class. I'm thinking of
taking all the important MCQs. एपिडेमियोलॉजी बहुत important है. एंड दूसरे क्लास में हम टॉक करेंगे अबाउट बायोस. यूट्यूब के क्लास में मे बी अबाउट बायोस्टैट्स important MCQs. फिर एक यूट्यूब क्लास में हम बात करेंगे अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स important MCQs. So that's how I'm planning to cover the YouTube classes. If it's okay with you, give me a thumbs up. Please do join. Please do share with your friends. And yes, crash course में avail करना है तो starts from 25th June. Use my code Dr. Neha 10. You'll get a 10% discount. And like, comment, subscribe to Unacademy. Check out my YouTube video on it. Yes, it will be live YouTube, Dikshant. Please spread with your friends also. YouTube channel Unacademy को भी check out करो. You can also go have a look at my YouTube channel, Dr. Neha Taneja's Community Medicine. And now that I'm on Unacademy, please like, comment, subscribe to Unacademy as well. ठीक है? So hope to see you again in my free YouTube class, special class, and hopefully in my crash course also. ठीक है? चलो, all the best. Take care. Be safe. Be healthy. Be hearty. And next time we'll be talking about biostats MCQs in great detail. ठीक है? Okay. Great. Take care. Stay blessed, all of you. Don't worry. Okay.